Hello everybody. The topic in previous lecture I explained you was relevant to the sources of market failure and how market failure occurs. And in this video lecture I will be explaining you what are the policies that government can use to correct market failure or to reach the optimum level of output. Before moving to the policies, I can reinforce you the basic information which we already discussed in previous topic as well. That is optimum level of output. Optimum level of output takes place where marginal social cost is equal to marginal social benefit. This is marginal social benefit and this is marginal social cost. Marginal social benefits are like a demand curve and cost curve is like a supply curve. An optimum level of output takes place at point E where output is Q and costs as well as benefits both are equal. On y-axis we are showing cost and benefits. Market failure occurs when there is overproduction, means whatever is being produced is overproduced and it is more than what is needed by the society. So this will be the deadweight loss. This triangular area will be the deadweight loss. Let's say EAB. This is known as deadweight loss to the society. In this case, society will be facing extra negative externalities. And the other scenario is underproduction, and underproduction is when we are producing lesser than the optimum level of output. So at output Q we are underproducing and again we are causing deadweight loss equal to this shaded area. So let's say this is point C and this is point D. So triangle ECD is again deadweight loss. In this scenario when there is underproduction, at output Q2 production is less than optimum level of output and we will be losing positive externalities. This shaded area CDE shows loss of positive externalities. And this shaded area which is on the right hand side of optimum level of output, it shows negative externalities, mean it will be causing pollution. When we are producing more than what is needed by the society, we are causing negative externalities. Now coming to the policies that can be used to correct this market failure. So in both cases at Q1 and Q2 we will be causing market failure, and this market failure can be corrected by using these policies. The first policy is using indirect tax. Whenever goods are overproduced, government can impose heavy indirect taxes to reduce production and consumption of these goods. Then definitely overproduction will be removed and supply will fall. As a result, supply curve will shift to the left from S to S1 and overproduction will be removed. Sometimes there is underproduction of merit goods and government can provide subsidy to the private sector so that they can produce greater volume of output, and as a result supply will rise and supply curve will shift to the right from S to S1 and underproduction will be removed. Sometimes government, instead of providing subsidy, what government does is government directly provides goods and services, produces and provides goods and services to the individual consumers. So direct provision is when government itself produces goods and provides them to the general public, and it is also known as nationalization. Provision of information is another way that can be used to correct market failure. Sometimes people are overproducing or over consuming demerit goods because they don't know the consequences of these goods. Then government can provide sufficient information to the individual so that they can reduce the production and consumption of these goods, and ultimately the market failure will be corrected because in the society negative externalities will reduce. Price regulation include minimum and maximum prices. Sometimes goods are underproduced because sellers and producers think that whatever price they are receiving is not sufficient. So government can set minimum price for them so that they are they feel surety that they will get a certain price, so they will produce greater quantity and underproduction will be removed. Buffer stock scheme is another way of government intervention. Government operates storage houses which are used to keep huge amount of goods, can be used at the time of any kind of shortages. रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के केस में गवर्नमेंट एनकरेज करती है एनर्जी प्रोड्यूसर्स को सो दैट दे कैन
use more renewable sources to produce energy और कार्बन इमिशन ताकि सोसाइटी में रिड्यूस हो सके. सो इससे भी लोग एनकरेज होंगे एंड डेफिनेटली देन दे विल यूज़ दोज टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी विच आर environment friendly and which reduce negative externalities and they are in favor of achieving optimum level of output. प्रॉपर्टी राइट्स के केस में क्या होता है कि आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने के लिए आपको एक लीगल राइट मिलता है. यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट मोर देन दैट. जैसे फ़िशिंग के केस में भी हो सकता है कि लाइक अगर फिशरमैन को अलाउ कर दिया जाए कि वो जितना मर्ज़ी फ़िश एक्सट्रैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, तो फ़िशिंग करना चाहें जितनी मर्ज़ी फ़िश कैच करना चाहें कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि डेफिनेटली दे विल ओवर एक्सप्लॉइटेड. प्रॉपर्टी राइट्स मेक श्योर करते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. उससे भी ज़ाहिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म होगी और ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन भी कंट्रोल हो जाएगी. नज थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, नज का मतलब जैसे आम लफ्ज़ों में हम कहें जैसे हम किसी को कोनी मारते हैं किसी की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, तो नज थ्योरी इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट विच सजेस्ट दैट government should enforce the ways that can be used as a nudge to attract consumers and change their behavior from using those goods which are causing negative externalities to the healthy food. For example, जैसे जनरली आप अगर शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि शॉप के बाहर डिस्प्ले में जंक फूड लगा होता है विच अट्रैक्ट्स एवरीवन, तो वो एक नज का काम कर रहा होता है. लेकिन वहाँ पे उसी की जगह फ्रूट्स रख दीजिए. गवर्नमेंट अगर मेक श्योर करे कि एवरी शॉप कीपर कीप्स ब्यूटीफुल फ्रूट्स इन दीज हैंगर्स, देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू बाय देम और जंक फूड का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा और हेल्दी फूड का यूज़ ज़्यादा होगा. तो अगेन हेल्थ इश्यूज़ भी इतने कॉज नहीं होंगे और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी कंट्रोल होंगी. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये पॉलिसीज़ क्या हमेशा फेवरेबल होंगी, इफ़ेक्टिव होंगी, इसी फैशन में काम करेंगी जिसके लिए गवर्नमेंट इनको यूज़ कर रही होती है. तो द आंसर इज़ दैट दीज पॉलिसीज़ आर नॉट ऑलवेज इफ़ेक्टिव टू वर्क इन द सेम फैशन. जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है. नाउ यू हैव टू टॉक अगेंस्ट दीज पॉइंट्स. इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स को लोग फेवर नहीं करते और उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और स्ट्राइक्स करते हैं, तो उसके केस में भी फिर रिसोर्सेज का लॉस होता है और सोसाइटी को फ़ायदा नहीं होता. सब्सिडी भी लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब्सिडी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, मिस यूज़ भी हो जाता है. डायरेक्ट प्रोविज़न के केस में भी अगेन गवर्नमेंट का अपना पर्सनल वर्कलोड बढ़ जाता है. गवर्नमेंट सेट्स अप ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसेस गुड्स, परचेसेस रॉ मटेरियल, हायर्स वर्कर्स, एवरीथिंग इज़ रियली टफ फॉर द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट का वर्कलोड बढ़ जाएगा. प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी लाजमी नहीं है हर दफ़ा इफेक्टिव हो. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सही तरीके से. इसी तरह से बफर स्टॉक स्कीम को अगर हम डिस्कस करें तो बफर स्टॉक स्कीम के थ्रू भी बफर स्टॉक्स को, वेयर हाउसेस को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, ये भी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ काम होता है. तो ये भी लाइक गवर्नमेंट के वर्कलोड को बढ़ाएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेगा. व्हेन यू आर टॉकिंग अगेंस्ट दीज पॉलिसीज़, तो इस तरह से आप हर पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं. तो एग्जामिनर जनरली आस्क क्वेश्चन कि डिस्कस द पॉलिसीज़ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज़ विच कैन बी यूज टू करेक्ट मार्केट फेलियर. तो ये पॉलिसीज़ सारी हैं जो मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ये पॉलिसीज़ हमेशा इफेक्टिव नहीं होती. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू to get these 3 important books for A2 level economics, and these books will really help you. One is comprehensive economics, it contains all notes. Second one is topical paper 3, it contains all topical MCQs arranged topically and every question is explained in detail. And the third book is topical paper 4, which contains solved case studies as well as full length answers of structured questions, essay questions. So this is it. Thank you so much. Bye bye.